आज के लिस्टेड है उस विषय को आज लिया जाएगा। कृपया आप सब लोग बैठिए प्लीज, कृपया बैठिए प्लीज। शून्यकाल है, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। शून्यकाल है, शून्यकाल सभी माननीय सदस्यगण का। देखिए, शून्यकाल को चलने दीजिए माननीय सदस्यगण। शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है, शून्यकाल को चलने दीजिए प्लीज। शून्यकाल के बाद आज जो लिस्टेड है 0 आवर में केवल वही माननीय सदस्यगण बोलेंगे। आप लोग भी बैठिए प्लीज, सभी लोग बैठ जाइए प्लीज बी सीटेड। आप सभी लोगों से आप शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते, शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते क्या? आप शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते? शून्यकाल ऐसा नहीं करते जी, ये तरीका भी ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। मिस्टर वेणुगोपाल जी प्लीज बी सीटेड एंड प्लीज आप लोग भी बैठिए, आप सब लोग बैठिए। जो विषय उठाया है आपको मौका बाद में मिलेगा। अभी कृपया ये शून्यकाल को चलने दीजिए। प्लीज बी सीटेड, प्लीज भी। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सब लोग बैठिए। ये तरीका भी ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। अपनी सीटों पर जाकर बैठिए प्लीज, प्लीज बी सीटेड इन योर सीट, प्लीज बी सीटेड। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, प्लीज बी सीटेड। नो नो नो, प्लीज बी सीटेड। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी से मेरा निवेदन है, कृपया करके अपने अपने सीट पर बैठ जाइए प्लीज। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज। आई एम नॉट अलाउइंग टू एनीबॉडी, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है। सदन को चलाना पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, दोनों का जिम्मेदारी है। आप सदन चलने दीजिए, ऐसा नहीं होता है। प्लीज 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 प्लीज, शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। 0 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच मेंबर, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। प्लीज हेल्प टू रन द हाउस, प्लीज हेल्प टू रन द हाउस। मैं शून्यकाल माननीय वेणुगोपाल जी, just listen to me, just please. I will allow to speak after the listed 0 hour. I will allow you after the 0 hour. I will allow Venugopal ji, please. I will allow लिस्ट के नामों के पुकारने के पश्चात मैं देखूंगा कि किस मान्य सदस्य ने मौका देना है। आपको भी मौका दिया जाएगा, आप प्लीज भी सीटेड। ऐसा नहीं चलता है जी, नो, इट्स नॉट गुड। प्लीज भी सीटेड। वेणुगोपाल जी, यू आर सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस, यू आर सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस। आप शून्यकाल भी नहीं चलन देते। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। अपोजिशन दे विल सीट। आप लोग भी बैठिए प्लीज, आप लोग भी बैठिए प्लीज। नहीं, ये लोग भी बैठेगा। ये तरीका बहुत गलत है, ये तरीका ठीक नहीं। वेणुगोपाल जी, आई एम आस्किंग यू यू विल बी अलाउड। जिन माननीय सदस्यों का यहाँ पर 0 वर्ड बोलने का है, बोलने के बाद हम इसको विचार करेंगे। आप बोलेंगे उसमें। प्लीज बी सीटेड। आस्क ऑल मेंबर्स टू बी सीटेड इन योर रेस्पेक्टिव सीट्स। प्लीज। आप जी, मैं फिर से बोल रहा हूं,
ये ठीक नहीं है वेणुगोपाल जी, 0 आवर चलने देना है। अगर 0 आवर भी आप चलने नहीं देता है तो सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए मैं स्थगित करता हूं। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्य अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। सभा पटल पर रखने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री जयंत चौधरी जी। Permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 to be laid on today's list of business. आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 सुश्री सुभा करंदले जी। स्पीकर से आपका अनुमति से आज का कार्य सूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 7 से अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Kirtivardhan Singh, I rise today on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned at serial number 7 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 8 श्री सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 8 of today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 9 श्री जयंत चौधरी जी। Honorable Speaker, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against the name of my colleague, Minister Shri Sukanto Majumdar at serial number 9 of today's list of business. आइटम नंबर 10 श्री पंकज चौधरी जी। मैं आज की कार्य सूची में अपने सहयोगी श्री हर्ष मल्होत्रा जी के नाम के सामने मत संख्या 10 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 श्री केसी वेणुगोपाल जी। Present the Hindi and English version of the 34th and 35th reports of the Public Accounts Committee as listed against my name in today's list of business, sir. Sir. आइटम नंबर 12 श्रीमती के कनिमुजी जी। आइटम नंबर 30 श्री पंकज और श्रीमती मालविका देवी जी। Namaskar, Honorable Chairperson, sir. With your permission, I would like to put on the table a copy of the final action taken statement on the 10th action taken report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 13 श्री पंकज चौधरी जी। पति महोदय, मैं आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सम्मुख अंकित मत संख्या 13 की हिंदी और अंग्रेजी की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 14 श्री सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to make a statement mentioned against my name at serial number 14 in today's list of business regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 379th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demands for grants 2025-26 pertaining to the Ministry of Tourism. Thank you, sir. धन्यवाद जी। माननीय सदस्यगण, कृपया सभा की कार्यवाही चलने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण शून्यकाल है। शून्यकाल के विषय जो आज के लिस्टेड है उस विषय को आज लिया जाएगा। कृपया आप सब लोग बैठिए प्लीज। कृपया बैठिए प्लीज। शून्यकाल है। प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। शून्यकाल है। शून्यकाल सभी माननीय सदस्यगण का देखिए। शून्यकाल को चलने दीजिए। माननीय सदस्यगण, शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। शून्यकाल को चलने दीजिए प्लीज। शून्यकाल के बाद आज जो लिस्टेड है 0 आवर में केवल वही माननीय सदस्यगण बोलेंगे।
आप लोग भी बैठिए प्लीज, सभी लोग बैठ जाइए प्लीज भी, प्लीज 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 भी सीटेड। आप सभी लोगों से आप शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते, शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते क्या आप? शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते? शून्यकाल ऐसा नहीं करते जी, ये तरीका भी ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। मिस्टर वेणुगोपाल जी प्लीज बी सीटेड एंड प्लीज आप लोग भी बैठिए, आप सब लोग बैठिए। जो विषय उठाया है आपको मौका बाद में मिलेगा, अभी कृपया ये शून्यकाल को चलने दीजिए। प्लीज बी सीटेड, प्लीज भी, आप सभी से विनम्र निवेदन है, सब लोग बैठिए। ये तरीका भी ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। अपनी सीटों पर जाकर बैठिए प्लीज, प्लीज बी सीटेड इन योर सीट, प्लीज बी सीटेड। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, प्लीज बी सीटेड। नो नो नो, प्लीज बी सीटेड। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी से मेरा निवेदन है, कृपया करके अपने अपने सीट पर बैठ जाइए प्लीज। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज। आई एम नॉट अलाउइंग टू एनीबॉडी, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है। सदन को चलाना पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, दोनों का जिम्मेदारी है। आप सदन चलने दीजिए, ऐसा नहीं होता है, प्लीज 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 प्लीज। शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीरो आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच मेंबर, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। प्लीज हेल्प टू रन द हाउस, प्लीज हेल्प टू रन द हाउस। मैं शून्यकाल, माननीय वेणुगोपाल जी, just listen to me, just please. I will allow to speak after the listed 0 hour. I will allow you after the 0 hour. I will allow Venugopal ji, please. I will allow लिस्ट के नामों के पुकारने के पश्चात मैं देखूंगा कि किस मान्य सदस्य ने मौका देना है। आपको भी मौका दिया जाएगा, आप प्लीज भी सीटेड। ऐसा नहीं चलता है जी, नो, इट्स नॉट गुड, प्लीज भी सीटेड। वेणुगोपाल जी, यू आर सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस, यू आर सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस। आप शून्यकाल भी नहीं चलन देते, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। अपोजिशन दे विल सीट। आप लोग भी बैठिए प्लीज, आप लोग भी बैठिए प्लीज। नहीं, ये लोग भी बैठेगा। ये तरीका बहुत गलत है, ये तरीका ठीक नहीं। वेणुगोपाल जी, आई एम आस्किंग यू यू विल बी अलाउड। जिन माननीय सदस्यों का यहाँ पर 0 वर्ड बोलने का है, बोलने के बाद हम इसको विचार करेंगे, आप बोलेंगे उसमें। प्लीज बी सीटेड, आस्क कॉल मेंबर्स टू बी सीटेड इन योर रेस्पेक्टिव सीट्स, प्लीज। आप जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ठीक नहीं है वेणुगोपाल जी, 0 आवर चलने देना है। अगर 0 आवर भी आप चलने नहीं देता है तो सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए मैं स्थगित करता हूं। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्य अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। सभा पटल पर रखने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री जयंत चौधरी जी। Permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4
to be laid on today's list of business. Item number 5, Sri Pankaj Chaudhary. सभापति महोदय, मैं आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 6, सुश्री शोभा करंदले. स्पीकर से आपका अनुमति से आज का कार्य सूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। Item number 7, Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Shri Kirtivardhan Singh, I rise today on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned at serial number 7 in today's list of business. Thank you. Item number 8, Sri Suresh Gopiji. Respected sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 8 of today's list of business. Thank you. Item number 9, Sri Jain Chaudhary. Honorable Speaker, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against the name of my colleague, Minister Shri Sukanto Majumdar at serial number 9 of today's list of business. Item number 10, Sri Pankaj Chaudhary. मैं आज की कार्य सूची में अपने सहयोगी श्री हर्ष मल्होत्रा जी के नाम के सामने मत संख्या 10 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 11, Sri K.C. Benugopal. Present the Hindi and English version of the 34th and 35th reports of the Public Accounts Committee as listed against my name in today's list of business, sir. Sir. Item number 12, Srimati K. Kanimuji. Item number 30, Sri Pankaj. Srimati Malavika Devi. Namaskar, Honorable Chairperson, sir. With your permission, I would like to put on the table a copy of the final action taken statement on the 10th action taken report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 13, Sri Pankaj Chaudhary. पति महोदय, मैं आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सम्मुख अंकित मत संख्या 13 की हिंदी और अंग्रेजी की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। Item number 14, Sri Suresh Gopiji. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नियम 377 जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपने मामलों को अनुमतिदान पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पे रख दिए। आइटम नंबर 14A, माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce the... I called his name, please. Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce the repealing and amending Bill 2025, which provides for repealing of certain enactments and to amend certain other enactments. Thank you, sir. Dr. T. Sumati ji, not present. Shri N.K. Premchandran ji. Sir, I am not objecting the bill. My point is that it is being circulated just now, the supplementary list of business. All these four bills, if you examine Rule 72(2), it is the right, legitimate demand of a member of the House to oppose the introduction of the bill. Unfortunately, when the bill is circulated yesterday in the night, that too in the late night and today morning, and when the bill is in such a way it is being circulated, it is a specific direction is there. Direction 19B is there. By virtue of 19B, the direction of the Honorable Speaker, it is mandatory that the bill has to be circulated. Introduction of the bill.
I do admit the fact that the speaker has every right to abandon it or every right to exempt it. But the point is that the members are getting an opportunity by virtue of subclause 2 of Rule 72, that by which when the bill is being introduced, we will be getting an opportunity to oppose the introduction of the bill. Today afternoon, just half an hour before, supplementary list of business is put in the website. So how the members are getting an opportunity to oppose the introduction of the bill without going into the contents of the bill, number one, and also the list is not being circulated, agenda is not being circulated. So my point is that in all these bills, it is not fair on the part of the government in bringing such type of bills and getting it introduced. It is bulldozing of the legislation and the members' rights are being taken away. Parliament cannot be taken for granted. Why the government can very well introduce the bill tomorrow? We are ready to oppose and we can very well state the reasons. Because the legislative competence. Yes, sir, I heard you. The legislative competence of the bill has to be challenged. If we want to challenge the legislative competence of the bill, we should have some homework. We should have to go to the bill, but unfortunately we are not getting an opportunity to go through the contents of the bill. Yes, sir, I heard you. Just coming to the house and supporting I it heard you, means sir. You it made is the point, quietly, sir. it is bulldozing of the Mr. legislation Gandhi. that may not be allowed. सर 72-2 ये कहता है कि ये हाउस कॉम्पिटेंट है या नहीं है इस बिल को डिस्कशन करने के लिए या पास करने के लिए। ये जो बिल है सर, ये तो इस हाउस के द्वारा पास किया हुआ बिल है जिसको कि सरकार रिपील करना चाहती है। इसमें कौन सा 72(1) का वायलेशन हो रहा है? Please listen to me. Honorable Speaker, sir, has waived the requirements of Directive 19A and 19B on a request made by the Honorable Minister. प्रश्न ये है कि विधायक को पुनः स्थापित करने का अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में कहें वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Chairperson, sir, I introduce the bill. Thank you. थैंक यू सर। माननीय मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। Chairman sir, with your kind permission, I rise to move for the leave to introduce a bill to enable and empower the universities and other institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation through coordination and determination of standards in institutions for higher education, research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Vikasit Bharat Shiksha Adhishtan to facilitate universities and other higher educational institutions to become independent, self-governing institutions and to promote excellence through a robust and transparent system of accreditation and autonomy, and for matters of connected therewith or incidental thereto. Sir, you will be given an opportunity to speak. I will give an opportunity. Kindly be seated. There are listed members to be given opportunity. माननीय श्रीमती ज्योति मणि जी, Not present. माननीय श्रीमती के काव्या जी, माननीय श्री मनीष तिवारी जी। Mr. Chairperson, I rise to oppose the introduction of the Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025 under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. The grounds for the opposition of the bill are as follows. First, the bill results in excessive centralization of higher education and violates the constitutional distribution of legislative competence. While Parliament may legislate under entry 66 of List 1 on coordination and determination of standards, this power is limited and cannot be used to occupy the entire field of legislation. The bill goes far beyond standards and intrudes into administration, affiliation, establishment and closure of university campuses, their institutional autonomy, matters falling within entry 25 of List 3 and entry 32 of List 2, which covers incorporation and regulation of state universities. Second,
The bill suffers from excessive delegation of legislative power, vast and substantial, ranging from accreditation frameworks, degree-granting powers, penalties, institutional autonomy, and even supersession are left to be determined by rules, regulations, and executive direction. This abdication of essential legislative functions violates settled constitutional principles governing delegated legislation. Third, the bill undermines the autonomy and independence of statutory regulatory bodies by making them bound by policy directions of the central government and subject to supersession at executive discretion. Such provisions erode institutional independence and offend the constitutional requirement of fairness, non-arbitrariness, and check on executive power under Article 14. Fourth, the bill also concerns Article 19(1)(g) of the Constitution of India by subjecting educational institutions to pervasive executive control, graded autonomy, intrusive compliance requirements, severe penalties and closure powers. It imposes disproportionate and unreasonable restrictions on the right to carry on education as an occupation. While regulation in the public interest is permissible under Article 19(6), the bill goes far beyond reasonable regulation and vests unguided overboard powers that fail the test of proportionality as laid down by this House and the Supreme Court. And last, Mr. Chairperson, sir, I oppose the bill given the overriding clause given by this bill over all other laws, coupled with the powers to supersede existing regulations, raising serious concerns of arbitrariness, legal uncertainty, impacting institutions established under state laws without any safeguards. And I do hope, Mr. Chairperson, sir, that the Minister would reply to each and every ground on which the introduction of this bill has been opposed. माननीय श्री N.K. Premchandran ji. Sir, thank you Yes, very sir. much for... I will give an opportunity to you, Sir, thank you very much. Please be seated. Yes, sir. Please continue. Sir, thank you very much for affording me this opportunity to object the introduction of the bill. It is very difficult as far as I am concerned to even pronounce. A member from the South India, it finds it very difficult so as to even pronounce the bill. Name of the nomenclature of the bill, the Vikasit Bharat Shiksha Adhistadhan. I can't understand what is meant by Adhistadhan as the bill 2025. So my first objection is the nomenclature of the bill by virtue of Article 348, Clause B. The authority, notwithstanding anything contained in foregoing provisions of this part, until Parliament by law otherwise provides, the authoritative text of a bill to be introduced or amendments there to be moved in either houses of the Parliament or in the House or either house of the legislature of the state shall be in English language. So the bill, the nomenclature of the bill shall be, it is not made. This is Article 348, Clause B, the authoritative text of a bill shall be in English, but unfortunately the bill, the nomenclature of the bill, it is being, I don't know which language it's, whether it is Sanskrit or Hindi, I don't know, the Vikasit Bharat Shiksha Adhisthan Bill 2025, that is my first objection. And the second objection is regarding the issue that is the entry 66 in the schedule in the central list. I do agree with regarding the higher education, but unfortunately the education, even the higher education is also included in the concurrent list in the 7th schedule in the state list. Sir, 1972 through 42nd amendment, this education is put in the concurrent list. What is the purpose of putting it in the concurrent list? Before that it was absolutely within the domain of the state list. And what is the purpose of it? The main purpose is that the local resources and the requirements of the concerned state should be taken into consideration in framing the legislation in respect of the education. But as far as this bill is concerned, if you go through the contents of the bill, it is mandatorily the state governments and all the universities, even a university which is established under an act of the state government, they are bound to abide by the conditions of the commission. That means indirectly imposing the powers of the central government
on which a right which is being vested upon on the state government means it is totally against the federal principles of the constitution, and it is centralization of the power with the center. It is against the basic principles of the federalism which is envisaged in the constitution. That is my second objection. And further the curriculum, the syllabus, and all these things are being determined by this University Higher Commission. The name is a little bit different in Hindi. I don't know it, but I think that it is a Higher Education Commission. There also the political philosophy and the political ideology of the government at the center has to be imposed on the state. That is the main object and purpose of this bill, by which this bill is being brought in, by which the state's resources, the local requirements, and the state culture, tradition, language that will be taken away means that is also against the basic principles of the constitution, the federal principles of the constitution. And also I fully agree with the objections already raised by Mr. Manish Tiwari ji. Along with that objection, and also the bill is not being circulated in proper time, and it is being bulldozing in the house without having proper agenda in the list of business. That also I do object with this objection. I very humbly request the Honorable Chairperson, please refer this matter for tomorrow so that we can have a detailed discussion regarding the introduction, and otherwise this may be withdrawn by the government. These are my objections. Thank you very much, sir. Professor Saugat Rai ji. Sir, already Mr. Manish Tiwari, Honourable Member, and Honourable Mr. Premchandran has opposed the introduction of the bill. But I first point out to the ineptness of the Ministry of Parliamentary Affairs. We got a copy of the bill late last time. Today in the list of business, the introduction of the bill was not mentioned. The supplementary list of business was circulated at 1 o'clock this afternoon. Now, is this the way the Parliamentary Affairs Ministry functions, where they do not even give us a chance to prepare for opposing the introduction? The main points opposing the introduction has been mentioned by Honourable Members Manish Tiwari and Mr. Premchandran. Sir, the Vikshit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025 is an effort to centralize power in the central government's hand with regard to educational matters. Earlier there was a UGC, University Grants Commission, which decided on allocating funds for educational institutions, both universities and colleges. Now that is being taken over and subsumed into the Vikshit Bharat Shiksha Adhishtan Bill. I do admit that under Article 66, the centre has the power to legislate on the educational matters, though it is in the concurrent list. Entry subject 25 is subject to entries 63, 66 of list 1. So Parliament cannot assume comprehensive control over state universities. We have so many state universities in West Bengal. The Parliament will have total power over this. They will appoint vice chancellors and all that. As it is the governors in Kerala, West Bengal, and Tamil Nadu, they are interfering with the functioning of the universities. Now this gives legitimate power to the centre to control the functioning of the universities in higher education. This is essentially undermines autonomy and independence of statutory regulating body and checks on executive power under Article 25. This bill, hence, should not be brought. We oppose the introduction. We oppose the ineptness, the failure of the Parliamentary Affairs Ministry. They do not even give us an opportunity to study a bill. Thank you, sir. Mananiya Shri Selvan This Ganpati is not ji. done. Sir, you are a learned man. Teneti sir, you give a ruling on this. Let it be a historic ruling that this is not the way the Parliament should function. Thank you, sir. Sir, I raised to oppose the introduction of the bill titled the Vikshit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2020 under Rule 72 of the Rule of Procedure.
So the very name, the nomenclature itself is, we deem it to be an imposition of Hindi on those states which do not know Hindi at all. The reason, sir, all these years this government, any law they bring up, any scheme that they bring up, that they title it only in Hindi language and not as required by the Constitution of India. The Constitution is clear. The bill has to be, the name has to be, the nomenclature has to be in the language in English, so that every citizen, every part of the country knows what is the veracity of the bill. Sir, second, this against the federal principle of the Constitution. Sir, the concurrent list, the regulatory council under the commission proposed in the bill is against the spirit of the Constitution, particularly contravening the provisions under entry 32 of list 2. The power which entry 44 of the list 1 says the union government does not have power to regulate universities and is being vested with the union by this bill is arbitrary. Sir, in the name of the coordination and determination of the standards, the entire regulation of higher education institution comes under the Government of India, the union government. This is totally a colorable legislation that gives arbitrary decision-making powers to the union government. Sir, this bill is nothing but an abuse of process of law. As per various provisions of this bill, practically the union government will be the sole decision-making authority, which is against the spirit of the Constitution. The union government will have the final say as if the bill is passed, which is totally contrary to the Constitution. In the name of Bharatiya knowledge system, whatever is asked to be followed by the Commission and its 3 vertical pillars has to be implemented by the higher education institution, failing which the institute will be deemed to have violated the Act and its accreditation may be withdrawn. So they have an enormous power. Whichever university they want to completely deemed to be violation, they can reject the accreditation. Without accreditation, no institute can function, and the accreditation powers lies with the accreditation council. Sir, we therefore we Thank you. Thank you, Thank you, Chairman, sir. On 3 grounds, I would like to oppose this bill. The bill's aggressive, unnecessary Sanskritized nomenclature directly violates Article 348(1)(b), which mandates that authoritative text of all bills shall be in the English language. There is no technical reason to use in Hindi names. 53 times Hindi names are used in this text of the bill. This Vinayam Parishad, இதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. We don't எதுமே எங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. எங்களுக்கு நாங்க பேசுறது எப்படி உங்களுக்கு புரியலையோ அதே மாதிரி நீங்க இப்படி இந்த மாதிரி இந்தியை கொண்டு வந்து எங்க மேல திணிச்சா எங்களுக்கும் ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. So அதனால வந்து it should be in English so that whichever the state wanted to understand the language, that language has to be allowed in this bill. This sees I see this as a kind of Hindi imposition. Already Tamil Nadu been actually deprived of Samashkrit SSA funds just because of we are not agreeing to the 3 language policy in the new education policy. This is another way of imposing Hindi on state like Tamil Nadu, which is very successful in 12 language system. Second thing, this is an attack on the federal structure. This bill moves forward despite the parliamentary standing committees on education explicit finding that the bill maintains a union government heavy composition and insufficient state representation. Sir, actually, given that state public universities and their affiliated colleges educate over 81% of India's total students enrollment and govern a network of over 46,000 affiliated institutions nationwide. This policy-making body's composition must reflect the immense scale and responsibility held by the state education sector.
then executive overreach and undermining autonomy. The proposal moves decisively away from the independent regulation. Provisions granting the union government overriding power over the commission represent a clear attempt at executive outreach, fundamentally violating the doctrine of separation of powers by subordinating a key regulatory body of the executive. Clause 11.4 clearly states that regulatory council needs the prior approval of central government to provide or revoke authorization of higher educational institution, the authority to grant degrees. On this ground, I oppose the introduction of the bill. Thank you, sir. Thank you, ma'am. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने का अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ है, हाँ, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनः स्थापित करें। Sir, I introduce the bill and propose that this should go to. Sir, 1 second, sir. 1 second. I introduce the bill, sir. माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू जी। During the meeting in the Business Advisory Committee, many honorable members have requested that this is an extensive bill and we need further deliberation on this bill. So government hereby proposed to send it to joint parliamentary committee and we authorize the honorable speaker to constitute the JPC in consultation with the other house and also with various political parties. Matter is placed. माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 14C, माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. Thank you, Speaker, sir. Thank you, sir. माननीय श्री बी बेहानंद जी, माननीय श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Chairperson, sir. I rise to oppose the introduction of the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025 under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha on the following grounds. First, the bill confers sweeping and pervasive powers on the central government across licensing, regulation, acquisition, tariff fixation, exemptions, emergency powers, and even novation of private contracts. Clauses empowering the centre to acquire mines, plants, reactors, substances, and contractual rights by executive action, while compensation determined largely by the government itself raises grave concerns under Article 300A of the Constitution of India and the guarantee against arbitrary deprivation of property. Second, permitting profit-seeking private participation in ultra-hazardous nuclear activities while simultaneously limiting liability, granting statutory immunities, and restricting judicial remedies undermines the state's non-delegable public trust obligations over life, health, and the environment. Such an arrangement amounts to an unconstitutional abdication of essential sovereign responsibilities and functions under Article 21 and 48A, where the state is required to act as a trustee and a guarantor and not merely as a facilitator or a licensor. Third, the bill suffers from excessive delegation of essential legislative functions. Core policy matters such as liability limits, safety standards, exemptions, regulatory norms, emergency measures, and even amendment of schedules are left to rules, regulations, or notifications
issued by the executive. This abdication of parliamentary responsibility violates settled constitutional limits on delegated legislation under Article 245 and 246. And finally, Mr. Chairperson, sir, the bill concentrates legislative, executive, regulatory and quasi-judicial powers in the central government and authorities appointed, controlled and removable by it, including the Atomic Energy Regulatory Board, which needs to be an independent, autonomous statutory regulator. The absence of institutional independence, coupled with wide direction issuing powers and insulation clauses, undermines the doctrine of separation of powers, which is a basic feature of the Constitution. On these grounds, I strongly oppose the introduction of this bill. Thank you, sir. Honorable Minister, sir. Manish ji is a good friend, his points well taken, but I just want to mention that most of these objections are based on the merits of the bill, which are normally and by convention taken up during the discussion. So right now we are here only to the competency of the introduction of the bill. माननीय श्री बेहनान जी, माननीय श्री बेहनान जी. He is not speaking. Call on N.K. Premchandran. माननीय श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी. Sir, Opposition of the bill and on legislative competence. प्रेमचंद्रन जी. yeah, sir. Thank you very much, sir. Sir, by Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I do oppose the bill, the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. So my point is, it is against the principles, against the directive principles of the state policy in Part 4 of the Constitution of India. Because the entire purpose of this bill, promoting this bill, we are having the Atomic Energy Act. And also we are having all these legal mechanisms are also there. And you see that the nuclear energy as well as rare earth minerals and mining and mineral separation and the nuclear section, everything is being vested with the public sector undertakings. The basic purpose by which this law is being brought in is so as to privatize this nuclear energy sector for the private companies. I am not mentioning any companies. I am from an area, from the minerals, beach and mineral area, by which we are having abundant thorium is there, supply is there, but unfortunately it is not being exploited and utilized by the government public sector undertakings so as to make use by the private entities and the private corporates for which this bill is being brought in. So it is against the directive principles of state policy. Therefore, I strongly oppose the introduction of the bill on the basis of this objection. Thank you very much, sir. Shri Professor Saugat Rai ji. I oppose this bill with a long name, Sustainable Harnessing of etc. etc. Now, this bill is being a watershed in the history of development of nuclear power in the country. You know, the Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, he set up the Atomic Energy Commission. The Atomic Energy Commission made significant progress in harnessing atomic energy. We had our first nuclear power plant in Tarapur. India undertook 2 nuclear implosions, whatever you call it. First at Pokhran in 74, then under Atal Bihari Vajpayee, again in Pokhran in 1998. So nuclear energy has been a matter which has exercised. Kindly be seated, please. Excuse me. Importance to repeat. Remember, sir, in 2000, Mananiya Sanjay Jaiswal ji. During Manmohan Singh's prime ministership, there was a big dispute in the country over nuclear liability bill should be introduced. Manmohan Singh's purpose was to get nuclear energy technical know-how from America and other countries. Now this is a new step where slowly the nuclear energy sector is sought to be given over to private sector. The government has been talking about this for some time, and now we have the Adani's big in power sector. Now they want to get into nuclear power sector, and this bill
is meant to facilitate Adani and other people. 1 second, sir. I heard you, sir. Mananiya Mantri Shri Kiran Rijiju ji. Since honorable members are repeatedly raising the opposition, opposing the introduction of the bill, today we are not passing the bill. There is no proposed for consideration. It is only introduction of the bill. And most of the oppositions are coming, which are repeatedly being mentioned by honorable member, including what Manish Tiwari has mentioned. I have a specific point only. Under Rule 72(1), it is very specific on the legislative competence of this House to bring this legislation. Yes. And under Schedule 7 of the Constitution, in the list of union list at serial number 6, it is very specific. Atomic energy and mineral resources necessary for its production. Yes. So this House has very much have its full legislative competence to bring this bill. And as the Honourable Minister has stated, if there are consideration on merits, it should be brought out at the time of consideration. At this point of time, it is only introduction of the bill. So that will come back. Today we are not putting it for consideration. If we assume that it is not in the competence of the House to bring, even if it is assumed that it is not in the competence of the House to bring in a bill related to nuclear energy or atomic energy, may I remind the honourable members and the House that the same House brought the Atomic Energy Act 1962 when Pandit ji was the Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, and the same House brought the CLND bill when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. So, if the bill could be brought in the House when Nehru ji was the Prime Minister, when it could be brought when Dr. Manmohan Singh ji was the Prime Minister, why now suddenly, because there is a different political party in power, suddenly the House has been forbidden from the prerogative of bringing in a bill on this subject? Yes, sir. I heard both the sides. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने के अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के हुआ, पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनः स्थापित सर, I introduce the bill. आइटम नंबर 16 अनुदानों की अनुपूरक मांगे, श्री नीरज मौर्य जी। धन्यवाद सभापति जी। पूरक अनुदान मांगों के लिए 2025-26 72 अनुदान मांगे शामिल हैं। कुल राशि 1,32,268 करोड़ रुपए और अतिरिक्त अनुदान की मांग 41,455 करोड़ रुपए। इसमें दो तिहाई यानी कि 27,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी पे खर्च करने की बात कही गई है। मान्यवर, ये आंकड़े कागज पर तो चमकदार लगते हैं, लेकिन हकीकत में एक ऐसी सरकार की कहानी बयान करते हैं जो प्राथमिकताओं से भटक गई है, क्योंकि ये ना केवल व्यर्थ का खर्च है बल्कि आम आदमी की पीड़ा को नज़रअंदाज करने का प्रमाण भी है। मान्यवर, किसानों के लिए जो रासायन उर्वरक पे मांग रखी गई है उसमें ज़्यादातर जो धन है वो सब्सिडी के लिए रखा गया है। मान्यवर, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से किसानों का बुरा हाल रहा। लोगों को ना तो फास्फोरस पोटास मिला, ना यूरिया मिली, ना DAP मिली। मान्यवर, इस अनुपूरक मांग में 23,423 करोड़ रुपए सब्सिडी पे लगाने की बात कही गई है। महोदय, आज जहां हमारा किसान MSP की मांग को लेके
दर दर भटक रहा है और उसको एमएसपी नहीं मिल रही है। किसान सड़कों पे खड़ा है, लेकिन सरकार सब्सिडी के नाम पे विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। आयातित यूरिया पर इतना खर्च क्यों? सरकार अपनी क्षमता बढ़ाने में नाकाम रही है, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला। किसान को केवल महंगाई, कर्ज और आत्महत्या करने पे किसान मजबूर है। हम मांग करते हैं कि सब्सिडी को पारदर्शी बनाया जाए, आयात पर निर्भरता कम करें और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी जाए, तभी मान्यवर अनुपूरक का कोई महत्व होगा। मान्यवर, बहुत सारे विभागों की बात इसमें चर्चा की गई है। हम प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग पे बात करना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग का जो हाल है, जिस तरह से शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो अनुपूरक मांगा गया है उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 1303.72 करोड़, इसमें 2023 योजना लाई गई है प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर, जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के लिए 65.45 करोड़। सभापति महोदय, ये क्या मजाक है जब भारत के जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं आज वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, गांव के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ऐसे में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए 42.63 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जबकि जो SC ST के लिए मात्र 2.04 करोड़ और ST के लिए तो केवल 33 लाख रुपए की मांग की गई है। ये भेदभाव क्यों? शिक्षा का अधिकार का जो कानून है वो अधर में लटका हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वादा अधूरा है, लेकिन पूरक मांगों में एलीट इंस्टीट्यूशन को प्राथमिकता। हमारी मांग है बुनियादी शिक्षा पर फोकस किया जाए, RTE को मजबूत बनाएं, ना कि चमकदार योजनाओं के नाम पर फंड बर्बाद करके ये जो 90,812 करोड़ के ग्रास वे का हिस्सा है, जो सेविंग से मैच तो हो रहा है, लेकिन सेविंग कहाँ से आई? शिक्षा बजट में कटौती करके आई है। तो शिक्षा के बजट को काटा ना जाए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को भी महत्व दिया जाए। ये हम आपसे, सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं। मान्यवर, अनुपूरक जो बजट आया है, इस बजट में अच्छा होता कि हमारे बरेली के अंदर एक सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड रबड़ फैक्ट्री के 1400 से अधिक स्थायी और हजारों अस्थायी श्रमिक जो बेरोजगार हो चुके हैं। फैक्ट्री बंद है और लगभग 1432 कर्मचारियों की देनदारियों का मामला भी लंबित है। मान्यवर, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के कारण इन परिवारों पर जीवन यापन का गहरा संकट लगातार बना हुआ है। फैक्ट्री प्रबंधन ने बकाया वेतन और अन्य देयों का समुचित भुगतान नहीं किया। सरकार की उदासीनता के कारण ये परिवार भूखों मरने के पर मजबूर हैं। सरकार इन श्रमिकों के भुगतान की व्यवस्था भी अगर इस अनुपूरक में करती तो शायद उन परिवारों का भी कुछ भला हो जाता, लेकिन मान्यवर सरकार ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मान्यवर, अनुपूरक बजट आता है, मुख्य बजट आता है और हम सब लोग यहाँ 543 लोग चुन के आते हैं। मान्यवर, हम लोग अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनता हर तरफ विकास की बात करती है, क्योंकि एक यहाँ से नारा दिया जा रहा है विकसित भारत का नारा, और हम लोग खास करके जो मेरा आंवला क्षेत्र है, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रास्ते अच्छे नहीं हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं, पीने की पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं। मान्यवर, जब हम लोग जाते हैं तो लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो हमसे कुछ विकास की बात करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन मान्यवर सरकार ने
जब केंद्रीय सरकार को खर्च करने का बजट कम लगा तो सरकार ने अनुपूरक की मांग कर ली। लेकिन मान्यवर हम सांसदगण जिनको बहुत कम सांसद निधि दी जाती है 5 करोड़ की, आप कृपया कंक्लूड। जब हमारे पास विकास की कमी आए या हम लोग नहीं काम कर पाते तो हम किससे पैसा मांगे। इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस विकास में सरकार को हम सांसद लोगों की निधि को बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। मान्यवर जहां तक मुझे जानकारी है कि सांसद निधि सन 2010 में 5 करोड़ की गई थी। 5 करोड़ तब की गई थी जब जीएसटी नहीं थी। आज पूरे देश की कई विधानसभाओं में जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका क्षेत्र छोटा होता है लेकिन उनकी निधि हम सांसदों से ज्यादा है। मान्यवर 5 करोड़ कहा जाता है, उसमें भी 10 लाख कंटीजेंसी काट लिया जाता है माननीय और जीएसटी लगाई जाती है। धन्यवाद। इसलिए मान्यवर प्रोफेसर सौगत राय जी, मान्यवर मेरी बात सुन लीजिए आप। माननीय प्रोफेसर सौगत राय जी, मान्यवर कंक्लूड कर रहा हूं बस थोड़ा। मान्यवर 2010 के मुकाबले महंगाई बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, मतदाता भी बढ़े हैं, लेकिन सांसद निधि बढ़ाने पे विचार नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार विकास नहीं कराना चाहती, और अगर विकास कराना चाहती है तो इस सांसद निधि को बढ़ाया जाए जिससे कि लोगों के हम लोग छोटे छोटे काम कर सके। मान्यवर सभापति महोदय, मैं अंत में प्रोफेसर सौगत राय जी, यस। उनको रोकने को बोलिए। नहीं सौगत राय जी आप बोलिए। नहीं आपको 3 बार एक्सटेंशन दे चुके हैं सर। आप 20 सेकंड में रखिए, आप 20 सेकंड में रखिए। यस सौगत राय जी आप बैठ जाइए। 20 सेकंड्स प्लीज। मान्यवर सभापति महोदय, जो प्राथमिकताएं हैं वो तो गड़बड़ लग रही हैं। रुपए 1,32,00,000 लाख करोड़ का जो व्यय है, इसमें किसान, युवा, महिला, गरीब कहाँ हैं? ये सरकार अमीरों के लिए अनुपूरक बजट लेके आई है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सब्सिडी से कारपोरेट्स को ना ध्यान दिया जाए, प्रोफेसर सौगत राय जी, जो हमारे गरीब जनता है उसका ध्यान दिया जाए। मैं इस अनुपूरक का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर next honorable member T.R. Baluji will be speaking, so kindly. I rise to speak on the supplementary demands for grants. I resent the fact that the finance minister is not here. Even the minister of state, he is there, he has become president of UP BJP. What will he look into finance? Sir, this demand is one for additional 41,000 crore spent. 41,000 crore please look at budget me. Yeah. Outgo. But actually the total supplementary demands is rupees 1.32 lakh crores. Out of this, 90,000 is technical because this amount will be made up from savings of different departments. 41,000 crores roughly will be outgo from the government. Out of this 41,000 crores, fertilizer is 18,000 crores. And out of that, 11,000 crores is for fertilizer subsidy, 7,000 crores is for import of urea. And 9,500 crores to Petroleum Ministry, out of which the oil companies will be made up for their loss as far as LPG is concerned. Unfortunately, this country produces only 33% of its petroleum requirement, so you can understand the situation. Now, I would say that the finance minister has tried to do a reasonable job in the sense that only 4.4%
is the fiscal deficit target we shall be able to meet this year. So even though the finance minister does not have a finance background, she has worked hard, I must say. But there are severe fault lines in the supplementary demands. What are the fault lines? Urea is in crisis. Farmers are lining up every day from the morning to get urea. Urea is being sold in black market. The government is doing nothing about that. Our production will be hit because of lack of urea. So second thing I want to mention is that oil marketing company, they want to be fully compensated for their loss in supplying LPG. So we may be in for another LPG subsidy, LPG price rise. I would urge the government that let them give more money, but not increase the price of LPG. Now I was saying that there are some fault lines in this whole budget. Why? Because even though we are controlling this thing, another is Vodafone. Vodafone government is considering relief for the financially stretched telco. So I would like to know whether government will actually give the answer. Now, sir, you are a studious man. You must have noticed 5 months ago, Modi's friend Trump, he said that India is a decaying economy, finished economy. This is what Trump said. I want to know what the central government says. Sir, the IMF has said that India is in C category. As far as IMF retained its C grade for India's national account statistics or GDP data. So even though the कमलेश जी आप उनको फ्री छोड़ दीजिए, हमारा बात नहीं सुनेंगे एकदम सर. Sir, GDP, they are saying that GDP growth is increasing. But IMF is saying that this is C grade in statistics. The government will have to reply what they are saying about. Sir, everybody will congratulate you for your election. But you listen to me. Sir, the other point I want to say is that where we are terrible is the rise in the fall of rupee. Rupee against dollar became 89.46 against the dollar from 89.12 against the euro. Our currency has fallen against all other major currencies, more against euro and also against the dollar. So we are in a very bad situation. All imports, including petroleum imports, will cost more. This is very bad. So we have to reply to Trump that we are not a dead economy. He said it on record that India is a dead economy. That's why we are not in a hurry to have a trade pact with India. IMF has given them a C grade. So we should be very concerned about all this. And you know, sir, we are discussing education a little while ago. India's rank in the Human Development Index is United Nations, UNDP, is 130. We are 130th country in the name of Human Development Index. That is on health, education and other matters. What has the government to answer about that? I don't want to speak for a long time, since Pratima Mondol will speak on our party. Sir, I want to pose one question.
why is the finance minister depriving West Bengal in the matter of MG-NREG? This year, the NREGA dues to West Bengal was 7,000 crores. For the last 2 years, is 52,000 crores. And total dues of West Bengal is 2 lakh crores. So why West Bengal is being deprived? You think we shall be kept down forever? No. We have already protested. We shall continue to protest. There are some people who are inimical to West Bengal, like Sukanta Majumdar. They don't want West Bengal to get money. But in spite of everything, we shall give poor people their sustenance and we shall win the elections in 2026. That's why supplementary demands is an essential part of the budget making exercise. We know that if the government has shortfall, it has to be made up. We know that there is also technical savings in the sense that they will be made from savings of other departments. So in this way, another technical supplementary expenditure is rupees 8,337 crores is sought for transfer to monetization of national highways, fund infrastructure investment draft, INVIT, and rupees 35,950 crore is sought for investment under conversion of outstanding spectrum auction dues into equity in respect of Vodafone Idea Limited. So all is not well in the state of Denmark. Even though the government says our economy will be third economy in the world, it will be $1 trillion economy. Economy has serious fault lines. I hope that the finance minister who insulted this house by not coming to the house in the time of debate will reply to all these questions whenever she comes here. Thank you, sir. Honorable Thiru T.R. Balu, sir. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த மாமன்றத்தில் நடப்பு நிதியாண்டில் முதல் துணை மானிய கோரிக்கை 1,32,000 கோடிக்கான துணை மானிய கோரிக்கையில் பேசுவதிலே எனக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு இருந்தாலும் இந்த 6 மாத காலத்திற்குள் இந்த 1,32,000 கோடிக்கு ஆன அதிகப்படியான செலவு எப்படி வருகிறது என்று ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற நேரத்தில் 2 வகையாக பிரித்து சொல்கிறார்கள். ஒன்று 90,812 கோடி ரூபாய் அதிக வருவாய் வந்ததாகவும் சேமிப்பு வந்ததாகவும் ஒரு வகையிலே சொல்லப்படுகிறது. அடுத்த அதிக செலவுகளுக்காக 41,400 கோடி ரூபாய் அதிக செலவினங்களுக்காக அது தேவைப்படுகிறது சொல்கிறார்கள். முன்னாலே எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற அந்த 90,812 கோடியில் அவர்கள் மிகவும் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டிய ஒன்று, எதிர்பார்க்காமல் வந்ததல்ல. சேமிப்பு என்றால் சேமிப்பு எப்படி வரும்? சேவிங்ஸ் பேங்க்ல போட்டு வச்சிருந்தாங்களா? இல்லை. அந்த பணம் அவருக்கு வழங்கிய பணம் அதிகப்படியாக அதிக தொகையை முன்னாலேயே ஜெனரல் பட்ஜெட்டில் முதலாக அளித்த நிதிநிலை அறிக்கையில் அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறார். அது திரும்ப வருகிறது, திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. அதே போல அவர்கள் எதிர்பார்க்காத ஒன்று என்று சொல்வதற்கு எந்த நியாயமும் இல்லை. எப்படி என்று கேட்டால், பணம் அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் திருப்பி அனுப்புகிறார்கள். அதற்கு பிறகு அதிக வருவாய் என்று சொல்கிறார்கள். எப்படி அதிக வருவாய் வரும்? அதிக வருவாய் என்றால் ஏதாவது அவருக்கு வணிகத்துறையில் ஈடுபடுகின்ற இலாக்காக்கள் வைத்திருந்து அந்த வணிகத்துறையின் மூலம் அதிக வருவாய் வந்திருக்கிறதா? இல்லை. ஆக இரண்டுமே குளறுபடிகளாக நம்ப முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது மட்டுமல்ல, 41,455 கோடி ரூபாய் அதிக செலவினங்கள் வருகிறது. ஆகவே எங்களுக்கு இந்த நிதி இந்த மானிய கோரிக்கை நான் சேர்த்திருக்கிறேன் என்று அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். 41,455 கோடியில் 18,525 கோடி ரூபாய் உரமானியமாக இருக்கிறது.
9,500 கோடி ரூபாய் கச்சா எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கின்ற மானியமாக இருக்கிறது. இது ரெண்டும் ஆண்டுதோறும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுதான். உரமானியம் என்பது ஆண்டுதோறும் கொடுக்கப்படுகின்ற ஒன்று. அதே போல கச்சா எண்ணெய்க்கு கொடுக்கப்படுகின்ற பெட்ரோலியத்துறையில் கொடுக்கப்படுகின்ற மானியம் என்பது ஆண்டுதோறும் வருகின்ற ஒன்று. இது எப்படி எதிர்பார்க்காமல் இருந்தார்கள்? அது மட்டுமல்ல, உள்துறைக்கு 2,500 கோடி ரூபாய், 1,200 கோடி ரூபாய் வெளியுறவுத்துறைக்கும் 1,300 கோடி ரூபாய் கல்வித்துறைக்கும் அவர் வழங்கியிருக்கிற காரணத்தினால் ஏறத்தாழ 41,500 கோடி ரூபாய் புதிதாக அவர்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னால் நான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நியாயமில்லை. ஏனென்றால் இதெல்லாம் முன்னாலே அவங்களுக்கு தெரியும். முன்னாலே அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தும் இந்த தொகையை ஏன் அவர்கள் முன்னாலே முதல்ல அறிவித்த நிதிநிலை அறிக்கையை சேர்க்கவில்லை என்றுதான் என்னுடைய கேள்வி. அவர்கள் பதில் உரைக்கின்ற பொழுது இதற்கு 90,812 கோடி ரூபாய்க்கும் அதே நேரத்தில் 41,450 கோடி ரூபாய்க்கும் உள்ள விளக்கத்தை அம்மையார் அவர்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த நிதி மானிய கோரிக்கையில் மிகவும் கவனமாக பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால், அவர்கள் IMF அகில உலக ஆணையம், அந்த ஆணையம் நிதி ஆணையம் என்ன சொல்கிறது? இவர்கள் இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்படுகின்ற நிதி நிலை அறிக்கைகளும் அவர் கையாளுகின்ற கணக்குகளும் சரியாக இல்லை, எல்லாம் சப்ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது, தரக்குறைவாக இருக்கிறது என்று சொல்வது மட்டுமல்ல, நம்முடைய நாட்டினுடைய நிதிநிலையை அக்கௌண்டிங் ப்ரொசீஜர் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லி தரக்குறைவு என்று சொல்லி சி கிரேட் என்ற நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளிவிட்டார்கள். இந்த சி கிரேடுக்கு போனதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன நியாயமான காரணங்கள் என்ன? ஏன்னா 10.1% இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்ட நிலையில் நிதிநிலை அறிக்கை முதலிலே வைக்கிற நேரத்தில் 10.1% இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் ஜிடிபி. அதற்கு பிறகு இப்போது என்ன சொல்கிறார்கள்? 8.2% தான் ஜிடிபி என்று பிரதமரே ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார். ஆக 2% திடீரென்று குறைந்ததற்கு என்ன காரணம்? இப்படிப்பட்ட மோசமான நிலையிலே இந்திய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி கண்டு கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் அந்த தரத்தை சி கிரேடுக்கு ABCD என்ற நிலையில் சி கிரேடுக்கு அவர்கள் தள்ளியிருக்கிறார்கள். ஆக இப்படிப்பட்ட நிலை உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த இந்திய அரசினுடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் நிச்சயமாக பலரும் சந்தேகப்படுகிறார்கள். டாக்டர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம், அதே போல டாக்டர் அருண்குமார், இவங்க 2 பேருமே இந்தியாவினுடைய மிகச்சிறந்த பொருளாதார நிபுணர்கள். அவர்களே இப்படி சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர்களே இதை நம்ப முடியாத நிலையில் இருக்கிறது என்று அவர்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லை, செஸ் வசூல் பண்றாங்க. செஸ் வரி, இந்த செஸ் வரி ஆண்டுதோறும் வசூல் பண்றாங்க. செஸ் வரி குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு குறிப்பிட்ட துறையில் அதை வசூல் செய்வாங்க. அந்த நிலை சரியான பிறகு அதை திரும்ப பெற்றுக்கணும். அதே நேரத்தில் குறிப்பிட்ட இலாக்காவுக்கு அந்த பணம் போய் சேரணும், செஸ் வரி போய் சேரணும். அப்படி போகல. குறிப்பாக 1975 போடப்பட்ட பெட்ரோலிய செஸ் வரி இன்று வரை 50 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 2.9 லட்சம், கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் கோடி வசூலாக இருக்கிறது. இந்த 3 லட்சம் கோடி 2,2,96,000 கோடி வசூலானதுல 902 கோடி மட்டும்தான் பெட்ரோலியத்துறைக்கு போகிறது. பெட்ரோலியத்துறையில் OIDB என்ற ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது, ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு. இந்த ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் போர்டுக்கு 2,95,000 கோடி அங்கே போயிருக்கணும். ஆனால் போனதா இல்லை. அங்கே போயிருந்தா புதுசா திட்டங்கள் வந்திருக்கும். இந்த எண்ணெய் பற்றாக்குறை, கச்சா எண்ணெய் பற்றாக்குறை 20% மேல இருக்குது. 80% இம்போர்ட் ஆகுது, வெளிநாட்டிலிருந்து இம்போர்ட் ஆகுது. இந்த இம்போர்ட் வெளியுறவுத்துறையிலிருந்து இம்போர்ட் ஆகிற எல்லாம் போயிருக்கும். ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒழுங்கினங்களுக்காகத்தான் IMF துறை இன்றைக்கு சி கிரேட் என்று நம்மை தாழ்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் கவலையோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இப்போது அது மட்டுமல்ல, அவருடைய துறை, இந்த இந்தியனுடைய நிதித்துறை அவருடைய இந்தியாவில் இருக்கின்ற மற்ற துறையை நம்ம சரியாக நடத்துவதில்லை. எப்படி நடத்துவதில்லை என்றால் இப்படித்தான். செஸ் வரி வாங்குறாங்க, வாங்கிட்டு இவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க. 902 கோடி ரூபாய் மட்டும் பெட்ரோலியத்துறை கொடுத்துட்டு மீது 2,90,80,000 கோடிக்கு மேல அவங்களே வச்சுக்கிறாங்க.
இது நியாயமா என்பதை கேட்க விரும்புகிறேன். ஒன்று, இதை போலத்தான் மாநில அரசுகளையும் ஏமாற்றுகிறார்கள். மாநில ஐ நீட் சம் 5 or 10 minutes ப்ளீஸ். மாநில அரசுகளை ஏமாற்றுகிறார்கள். எப்படி ஏமாற்றுகிறார்கள்? மன்ரேகா திட்டம். இந்த மன்ரேகா திட்டத்தை காந்தி பேருக்கிறதால இன்னைக்கு மாத்திரத்தை முயற்சி பண்ணுறாங்க. மிக மோசமான நிலையில் இந்த அரசு போய் கொடுக்குறது இதே ஒன்று எடுத்துக்காட்டு. இன்றைக்கு 100 நாள் வேலை திட்டம் குறைந்து போய் கொண்டே இருக்கிறது மட்டுமல்ல, 30 கோடி மனித நாட்கள் தமிழகத்திற்கு இருந்த நிலை மாறி இன்றைக்கு 12 கோடி மனித நாட்கள் மட்டும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இதை விட கேவலம் என்னவாக இருக்க முடியும்? 1290 கோடி ரூபாயை மாநில அரசுக்கு ஒன்றிய அரசு தரணும். இதுவரைக்கும் தந்தபாடு இல்லை. 1290 பொருள்களுக்காக வழங்கிய தொகை, தமிழ்நாடு அரசு பொருள்களுக்காக வழங்கிய தொகை இதுவரை அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. அது மட்டுமல்ல, ரயில்வே துறையில் 31,450 கோடி திட்டம். அந்த திட்டத்தில் 301 கோடி மட்டும்தான் ரயில்வே திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கி இருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? 0.95%, 1% கூட இல்லை. ஆனால் தமிழகத்திலிருந்து மத்திய அரசுடைய வரி வருவாய் கொடுக்கப்படுவது 1 லட்சம் கோடி. இந்த 1 லட்சம் கோடி வாங்கிட்டு 301 கோடி மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சொன்னா அது எப்படி சரியா வரும்? ரயில்வே துறைக்கு 301 கோடி, இது எப்படி சரியா வரும்? மெட்ரோ ரயில் திட்டம் 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் நாங்கள் திட்டங்களை அனுப்பிச்சோம். 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் அனுப்பிச்ச திட்டத்துக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் திருப்பி அனுப்புறாங்க திட்டம். மதுரைக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் மிகப்பெரிய நகரங்களாக இருக்கின்ற 2 இடத்துக்கும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வேணும் சொல்லி நாங்கள் அனுப்பிச்சதுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாம திடீர்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா 20 லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு குறைவாக இருக்கிறது. அது 2011 சென்சஸ். 2011 சென்சஸ்ல எடுத்த போது 20 லட்சம் மக்களுக்கு குறைவாக இருக்காங்க, அது உங்களுக்கு கிடையாது என்று இன்னைக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள். நான் கேட்கிறேன், ஆக்ராவில், இந்தூர்ல, புவனேஸ்வர்ல, நவி மும்பையில் இந்த கணக்கு வராதா? அது மட்டுமல்ல, ஜனத்தொகை கணக்கு பார்க்கறது, திட்டத்தை நிறுவது ஜனத்தொகை கணக்கு பார்க்கறதா, வயபிலிட்டியை பார்க்கறதா, லாப நஷ்டத்தை பார்க்கறதா, திட்டத்தில் லாப நஷ்டம் வருதான்னு பார்க்கறதா, அல்லது ஜனத்தொகை கணக்கை பார்க்கறதா? இந்த முறை மிக மோசமாக இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்வேன். அதோட பூந்தமல்லிருந்து சென்னை வரைக்கும் ஒரு 10 கிலோமீட்டர். இந்த 10 கிலோமீட்டர் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, முடிந்து போனது, சேஃப்டி சர்டிஃபிகேட்லாம் வந்துடுச்சு. ஆனாலும் அந்த திட்டத்தை இதுவரை துவங்கி அந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. இது மிக மிக மோசமான நிலை என்பதை இந்த ஒன்றிய அரசு எப்படி தமிழக அரசை நடத்துகிறது என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. மாய்ச்சர் கண்டென்ட். விவசாயிகள் நெல்லை விளைவிக்கிறாங்க. செப்டம்பர் மாதத்தில் மழை பெஞ்சு அந்த மாதிரி மோசமான நிலை வந்த பிறகு அறுவடைக்கு போகின்ற நிலை, அறுவடை பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. அறுவடை பன்றிய நெல்மணிகள் களத்து மேட்டுக்கு வருது. களத்து மேட்டில் இன்னும் ஈரப்பதம் அதிகமாகிறது. 17% தான் ஈரப்பதம் ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் 22% வேண்டும் என்று தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் திரும்ப கடிதம் எழுதுகிறார், கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். ஆனால் இவர்கள் தரவில்லை. இப்ப என்ன பண்ண போறாங்க? தஞ்சாவூர்ல எங்க இந்த நிலை ஏற்பட்டதோ, தஞ்சை டெல்டாவிலும் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டுல இந்த நிலை ஏற்பட்டது. தஞ்சாவூர்ல இவங்க மாநாடு போட போறாங்களா? யாரு? அடுத்த 2-3 மாசத்துல பிரதமர் போக போறாரு. பிரதமர் போகும்போது என்ன வரவேற்பு இருக்கும் என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். இந்த 17% 22% என்பதை அவர்கள் கொடுப்பதற்கு தவிர்க்கிறார்கள். அடுத்தது கல்வி திட்டம், சமக்ர சுச்சா SSA ஸ்கீம். இந்த SSA ஸ்கீமுக்கு 3548 கோடி கொடுக்கணும். இந்த 3548 கோடியை புறக்கணிக்கிற முடியாதுங்கிறாங்க. ஏன் முடியாது? கல்வி திட்டத்தை ஏற்றுக்கணும். கல்வி திட்டம் இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்ட், இட் இஸ் எ பாலிசி ஒன்லி. ஒன்றிய அரசுடைய கொள்கையும் மாநில அரசு கொள்கையும் வேறு இருக்கலாம். இதை நீங்க எப்படி எங்களை இன்சிஸ்ட் பண்ண முடியும்? அந்த எங்களுடைய கொள்கை தான் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். இன்னைக்கு இல்லை, எப்போதும் இந்தியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். இந்தியை ஏற்றுக்கொள்ளாத தமிழ்நாடு தொடர்ந்து நீடிக்கும். இது அறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய கொள்கை, அண்ணன் கலைஞர் அவருடைய கொள்கை. இந்த திட்டத்திலிருந்து நாங்கள் மாறவே மாட்டோம். இந்தி என்றைக்கும் கிடையாது தமிழகத்தில் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். 2010 ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். 4 லட்சம் ஆசிரியர்கள் தமிழ்நாட்டில் நியமிக்கப்படுகின்ற ஆசிரியர்களுக்கு புது கொள்கை வகுக்கிறார்கள். நீங்க தகுதி தேர்வு பெற்றாதான் நீங்க ஆசிரியராக தொடர்ந்து போக முடியும் என்று சொல்கிறார்கள். 2010 அப்பாயின்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கு 2024.
14 வருஷம் கழிச்சு 2 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க தகுதி தேர்வு பெற்று நீ பாஸ் பண்ணாதான் தகுதி ஏற்பட்டாதான் நீ தொடர்ந்து ஆசிரியரை தொடர முடியாது முடிவதற்கு சான்ஸே கிடையாது. மத்திய அரசு நேரடியாக கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகி புதிதாக அவர்களுக்கு அனுமதி வாங்கி தர வேண்டும். இல்லை என்றால் 4 லட்சம் ஆசிரியர்களுடைய நிலை என்னவாகும் என்பதை அவர்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். ஆகவே என்னுடைய அன்புக்குரிய நண்பர்களே, we demand immediate release of pending Manrega funds due on restoration of labor and materials allegation. Number 2, to approve the increased moisture content of paddy 22% from 17%. Immediate approval of metro projects Coimbatore and Madurai. Immediate release of rightful due of 3,548 from SSA scheme without any further delay. ஆசிரியர்களுக்காக 2010 வழங்கப்பட்ட அந்த பணி தொடர்ந்து நீடிப்பதற்காக அரசு இந்த ஒன்றிய அரசு நீதிமன்றத்தை நாடி புதிய அரசு ஆணையை பெற்று அந்த ஆசிரியர்களுக்கு வாழ்வளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம், நன்றி. Thank you. Thank you, honorable member. Sri K.C. Neni Shivnathji. Thank you, sir. I raise to speak on first batch of supplementary demand of grants for year 25-26. This batch covers 72 grants with government seeking Parliament's approval for additional grants of 1.32 lakh crores. Sir, some of honorable members from opposition have spoken about economic disorder, but the facts are different. Under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, FDI has crossed 81 billion USD. MSP for major crops has gone up by 50 to 70% with record procurement helping farmers, and over 75% of defense capital budget is now kept for Indian industry, boosting jobs and national security. Now speaking about supplementary demand for grants 25-26. Under these supplementary grants, Minister of Chemical and Fertilizers has been reappropriated 31,000 crores, a significant portion of which will strengthen urea subsidy scheme, sir. Sir, urea is not only a fertilizer, it is the backbone for crop growth. Any delay in supply threatens entire agricultural cycle. This year, Andhra Pradesh faced sudden surge in demand during peak Kharif season. At this critical moment, our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu ji personally intervened. He took up the issue with Union government. The Minister J.P. Nadda ji, who swiftly responded, releasing fresh stocks and ensuring uninterrupted supply across the states. This timely assistance protected our farmers, our crops and their livelihood. Sir, an amount of 18,800 crores has been reappropriated to the Ministry of Road Transport and Highways. The Union government has built 10,660 kilometers highways in financial year 25, exceeding its target of 10,400 kilometers. This indicates government commitment to ensure connectivity across the country. Another critical transport project to ensure connectivity is the metro rail. Sir, among all the southern states, Andhra Pradesh is the only state without metro rail system. In this background, Vijayawada and Vizag metro projects are not just transport systems, they are necessary for the growth of this region and achieving Prime Minister's goal of Viksit Bharat. Sir, 1,303 crores is being reappropriated to Ministry of Education. One of the key sectors in education is medical, for which building of new colleges are essential. Sir, when there is a crunch in financial resources, the central government from time to time comes up with innovative models to ensure development does not stop. But sir, YSRCP party today in AP is opposing the development of medical colleges. This is the sector they themselves neglected with inaction and false promises. They promised to build 17 new medical colleges, but the truth is that not even a single stone was laid to most of them. In 4 years of YCP government,
Instead of 85,000 crores, they have spent less than 1,000 crores. In this space, it will take 15 years for completion of these 17 medical colleges. Sir, after failing so badly, the same party now opposes nationally approved PPP model. The Department of Economic Affairs, Government of India has notified this model, and the apex body of medical education, the National Medical Commission, has recommended to build PPP medical colleges. Sir, yet, and also the House Standing Committee on Health also recommended this colleges of this model. Yet YSRCP is against this model because they don't understand the difference between PPP and privatization. Sir, under PPP model, the government keeps full control while the private partners only support infrastructure, operation and completing the construction within 2 years. Half the seats remains under government quota, all the reservations stay same, and the fees for these seats are capped to protect the students. In these hospitals, 70% of beds are reserved for Ayushman Bharat patients. This model ensures better infrastructure while safeguarding students and poor. Sir, if YSRCP is really committed for public, they would have not spent 500 crores government money to build a palace for their chief minister, a gross ugly waste of public wealth. They could have instead used 500 crores for operational of these medical colleges. Their opposition to medical colleges through PPP model exposes their hypocrisy. Neither they will work nor they will allow anyone else to work. They cannot digest the development being pursued by our Honorable Chief Minister Nanda Chandrababu Naidu ji. Finally, sir, I conclude the supplementary grants show the government's clear commitment to welfare, agriculture, education and health. Under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India has delivered 8.2% of GDP growth despite of global uncertainty. Together we build a stronger and brighter nation to our people. Thank you, sir. Thank you, Honorable Member. Mananiya Sadasya Shri K.C. Benugopal ji. Honorable Chairman, sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion of supplementary grants for demands. Basically, these demands for grants introduced in December 2025, about 72 demands and 1 appropriation. Sir, today the truth, the Indian economy is staring in the rise. Indian economy is staring in the face, sir. The rupee is weak, sir. Prices are high. Job is lacking, and confidence is collapsing. This is not a bad luck, sir. Bad governance of this government. The rupee has fallen to its lowest ever, closing 90 against the US dollar, and still sliding, sir. This is not a small technical issue. When Honorable Finance Minister is not there here, 1,32,000 rupees they are asking from the Parliament, but Honorable FM is not here. Supplementary demands, I think FM's presence is needed. When we are talking about the rupees lowest price, she used to reply to us that it is not going to affect the economy at all. But what is the real thing, sir? It means it will higher the fuel prices, it will costlier imports, sir, and rising pressure on the common man actually. And Honorable Prime Minister, when he was the Chief Minister of Gujarat, he has told the rupees reaching, that point of time, rupees reaching 58 against US dollar. Then what he told, sir, seems there is a competition going in between the rupee and the government in Delhi about whose dignity goes down faster. This was told by our Honorable Prime Minister, sir. Now, sir, now rupees now 90 against the US dollar, then whose dignity is now glowing, sir. That point of time, then Gujarat Chief Minister compared to the Delhi government. Now the rupees is 90. Then whose dignity is now lower? Certainly union government dignity is lower comparing to the rupees. Very, very unfortunate, sir. Sir, even more worrying is that the GDP rates that are given by the government is totally questionable internationally. They are questioned internationally. The IMF has flagged serious weakness in India's GDP data. Still the government is telling our GDP is better, but IMF still is already contesting it. So I would like to point out the concern with regard to the Ministry of Road Transport and Highway. We are passing the demands for supplementary demands for road transport and highway, sir.
For the year 25-26, the Ministry of Road Transport and Highway proposed an expenditure nearly 2.87 lakh crore, which is higher than last year. The allocation for roads and bridges alone is more than 1.16 lakh crore. India today has the second largest road network in the world. I agree, sir. National Highway network is developing and expanding. But Speaker, sir, the House must ask a fundamental question, sir. If the massive spending resulting in safe roads, sir, accountable governments is there, and value for public money is there in this. Or is it creating a system where public funds are converted into private few for a chosen few? The debate is not about the opposing highway development. We are all for development, sir. But debate is about the corruption happening in this area. Sir, the Bharatmala project we discussed so many times. It was intended to complete within 5 years. Now it is already 8 years already over. 50% of the work is not completed. Sir, now I am coming to my state, Kerala, sir. The consequences of reckless model are most visible in Kerala, sir, now. From Kasaragod in the north to Kollam in the south, national highway projects, two major stretches, NH 66 and NH 544, are collapsing before the eyes of the public. It's virtually collapsing, sir, roads. I think you are also aware of that. The roads are collapsing like anything in national highway. In Kerala stretch, sir. Elevated structures are sinking, retaining walls are collapsing, service roads are flooded, and fresh cracks are appearing on newly constructed roads. Sir, in May this year, the entire stretch of elevated highway in Korea was collapsed. The scene was catastrophic. The entire stretch is now beyond repair. Recently, NH wall in Kollam has been collapsed. Our Ramachandran raised this issue already. I can list out dozens of such incidents, sir. Sir, the problem, what is the problem? What is the problem? In my own constituency, one death was happened. 40 people died because of this construction site. There is no proper management. Sir, what is happening in Kerala is not act of nature, sir. It is the result of a system where speed and profit were prioritized over safety and scientific planning, sir. Sir, the House must understand that these failures are not accidental. They are the outcome of a development model designed to maximize corporate profit, not public safety. And this brings me to the core issue behind the supplementary demand, basically the highway scam, sir. Let us look at one project, Adiyur-Vengalam stretch of NH 66 in the North Kerala. A road of just 40 kilometers. This project was awarded to Adani Enterprises for 1,832 crore. Adani did not build, sir. What they have done? Adani did not build. He subcontracted the entire work to Wagad Infra Projects, an Ahmedabad-based firm, for just 971 crore. You see, sir, the total contract was 1,838. He has given the subcontract to 971 crores, almost half the amount. The actual construction cost is therefore 23.7 crore per. Basically, the actual construction cost is 23.7 crore per kilometer. But Adani is being paid 45 crore per kilometer, sir. Sir, Adani will earn 2,043 crore from this one project alone, an excess profit of 1,310 crore funded entirely by public money, sir. This loot is legal, sir. I am not telling it is illegal. This loot is legal because the system was designed for it, sir. Kerala NH 66 6-lane highway project has been divided into more than 19 phases. Some of these phases are being executed under the EPC model and some are in the HAM model. Projects executed under EPC model in Kerala have cost between 26 crore and 32 crores per kilometer, even with higher complexity. The bridges are there. Actually, the area is designed. Area is also very much complicated, but their money is lesser. The scam is not accidental, sir. It was
designed and facilitated through the hybrid annuity model HAM introduced in 2016 under the Modi government. Here is how HAM works. 40% of the project cost is paid during the construction itself. 60% is paid over 15 years annuity with interest of the bank rate plus 3%. A separate contract covers 50 years of maintenance on top of the 1,838 crores. Sir, you can see that in this case, the contractor got 735 crores during the construction itself. He will get 1,102 crores over 15 years as annuity. He will also get 940 crores as interest. He spent only 97 crores and earns over 2,043 crores. This is the profit margin more than 1,000 crores without laying a single brick himself. Just a minute. Rule. Mister, what's the rule? What's the rule? Rule 216. Please. 216 ये कहता है, वेणुगोपाल जी हमारे सीनियर सांसद हैं, पीएससी के चेयरमैन हैं। रूल ये कहता है कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में जिन चीज़ों के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स आया है, केवल और केवल उसी के लिए चर्चा हो सकती है। किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की चर्चा नहीं हो सकती, न किसी पॉलिसी की चर्चा हो सकती है। इसीलिए ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए उनको केवल डिमांड पर कहिए सर। ये रूल हमने नहीं बनाया है, रूल आपने बनाया है। रूल मावलंकर साहब ने बनाया, हमने नहीं बनाया। यही 216 है सर, रूल यही है। इसीलिए उनको कन्फाइंड करिए सर कि केवल और केवल वो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर ही चर्चा करेंगे, सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर। माननीय My colleague in the honorable member, Venugopal. My colleague in the treasury bench, Srikanji, point out a point of order. Rule 216, Sir, we are giving supplementary demands. They are asking for national highway also, sir. I quoted that. They are asking supplementary demand for national highway. It's okay. Then we cannot discuss about national highway project, sir. No, you can. Then what else we have to discuss, sir? But what else has to discuss, sir? Sir, let me come. Only 3-4 minutes I will take, sir. 216. Sir, you have to follow the rule 216. Sir, I am seriously taking it, sir. Sir, this is a concern of our state, sir. Sir, this is a concern of our state. Every day road is collapsing, sir. Every day road is collapsing. People are in a very much fear complex. Please. Just 216, the rule. The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same, and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them, save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion. You are a senior member of the house. You should follow the rules. You should follow. No. Please be seated. You are not allowed. Please be seated. He knows. He is capable. He is capable. He is senior member. And Nisikanji raised this concern under Rule 216. Okay, so you should go with the Rule 216. Please be seated. Let you go. Let me complete, sir. Yeah. Sir, I am very much speaking on the issue of national highway, where the finance is demanding amount from Parliament. The finance ministry is demanding to the Parliament that this much amount has to be given to National Highway Department as a supplementary demands for grants. That's why I am speaking about that. This is one of the major issue Kerala is concerning, sir. Every day road is collapsing, bridge is collapsing. People are in a fear complex. Sir, people are dying, sir. Sir, if you are not discussing in the Parliament, where it has to be discussed, sir? If you are not discussing in the supplementary demands for grants, where it has to discuss? Sir, my point is that this corruption, sir, I talk about the Adiyur Vengalam, sir, 45 crore per kilometer. You see Talapadi to Changala, there are only 43.7. There were 7 major bridges and 17 grade separators are there. This road is very plain. There are 17 bridges are there. There are only 43 crores. Kappirikadu to Talikulam, similar geography, cost only 35.1 crore.
Sir, this is a clearly loot, legalized loot, sir. This is a legalized loot, sir. Sir, we have to discuss. That every day, Honorable Minister itself sometimes told that everything is going wrong. Honorable Minister already told. Sir, my point is that, sir, this should be investigated, sir. This should be investigated. Because this is all public money, sir. Public money cannot be taken away by some individual, sir. Sir, there should be a scrutiny, there should be an investigation, sir. We are demanding for an investigation. With these words, I am concluding my speech, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Honourable Member. Shri Alok Kumar Sumanji. धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फर्स्ट बैच फॉर 2025-26 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के माध्यम से लगभग 41,455 करोड़ रुपए के नगद खर्च के लिए अनुमोदन मांगा गया है। यह राशि ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर 1,32,268 करोड़ रुपए का एक हिस्सा है। हालांकि 90,812 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंत्रालयों ने आंतरिक बजट से एडजस्ट की जाएगी। शेष राशि 41,455 करोड़ रुपए के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल आवश्यक है। महोदय, वर्ल्ड की इकोनॉमी में प्राइसेज के बढ़ने या घटने के कारण और जन कल्याण की योजनाओं के बढ़ते खर्च की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लाया गया है। वर्तमान सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का बड़ा हिस्सा सब्सिडी को पूरा करने के लिए दिया गया है महोदय, जिसमें एलपीजी बिक्री कर पर नुकसान की भरपाई के लिए 9,473 करोड़ रुपए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2,500 करोड़ रुपए, होम मिनिस्ट्री के लिए 2,298 करोड़ एवं हायर एजुकेशन के लिए 1,303 करोड़ रुपए दिए गए हैं महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा बिहार और देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। यह कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि वर्ष 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी का 8.2% जीडीपी ग्रोथ हुआ है, जो इम्प्रेसिव है एवं देश के राज्यों एवं अन्य सबों के लिए यह इनकरेजिंग है। यह सरकार की ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के कारण संभव हुआ महोदय। आप आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है और हम जल्दी ही वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं। वर्ल्ड के विकास के लिए भारत का योगदान 20% होने जा रहा है। आज हमारा फिस्कल डिफिसिट 4.4% होने की उम्मीद है। महोदय, देश में कंपनियां कैपिटल मार्केट से रिकॉर्ड फंड जुटा रही हैं, हमारे बैंक्स मजबूती के साथ योगदान दे रहे हैं, देश में इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, देश की करंट अकाउंट डिफिसिट कंट्रोल में है, फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत मजबूत है। आज हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपए मार्केट में लगा रहे हैं। महोदय, सरकार के सुधार का ही परिणाम है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने रिकॉर्ड हाई के करीब है। टेक्नोलॉजिकल विकास में भी देश काफ़ी आगे बढ़ा है। 5G स्टैक देश में ही विकसित हुआ और हमने मेड इन इंडिया 5G भी बनाया और आज हम मेड इन इंडिया 6G पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। आज देश में पारदर्शी नीति के कारण सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्री भी लगनी शुरू हो चुकी है महोदय। महोदय, अगर हम यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो और उसके लक्ष्यों को देखें तो हमने काफ़ी हद तक अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर लिया है और यह देश के लिए और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में हथुआ में सब्या एयरफील्ड है जो 471 एकड़ में फैला हुआ है। उसकी उड़ान योजना में 2020 में शामिल हो चुकी है और उसकी पिलरिंग एंड बाउंड्री हो चुकी है। बिडिंग की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। अतः महोदय, मेरा निवेदन है कि बिडिंग की प्रक्रिया शुरू कर इसको जल्द से जल्द चालू करने की कृपा की जाए।
महोदय, मैं अपनी बात रखते हुए अनुरोध करूंगा कि राज्यों में वेतन एवं पेंशन पर हो रहे खर्च के लिए भी जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान किया जाए, ताकि विकास संबंधी जरूरतों के लिए अधिक रकम खर्च हो सके। राज्यों के बीच बढ़ती राजकोषीय असमानता को भी कम किया जा सके। सबसे अधिक पूंजीगत व्यय करने वाले सड़क एवं रेलवे मंत्रालयों में वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अगस्त के दौरान बजट आवंटन के अनुपात में अधिक व्यय हुए हैं महोदय। पिछले साल की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि एवं राजस्व में आई कमी के कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है। सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरोसा है महोदय। अपने देश में दूसरे देशों की तुलना में सरकारी खर्च कम है। 2022-23 के आंकड़े के अनुसार भारत में सरकारी खर्च का आंकड़ा देखें तो जीडीपी का 28.62% है, चीन का 33.4%, ब्राज़ील का 46.38%, अमेरिका का 36.2% और फ्रांस का 58.32% है। मेरा इसमें सुझाव है महोदय कि आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। महोदय, सरकार ने विकास विरोधी बाधाओं को दूर करने के लिए और उसे सुसंगत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, जिससे कारोबारी लोगों की सुगमता बढ़ी है। बिजनेस रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग दिखती है। वैश्विक जटिलताओं के बावजूद सर्विस निर्यात बढ़ने से व्यापार में संतुलन बना हुआ है। महोदय, दुनिया भर में जहां 2.3 अरब लोग अभी भी खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं, वहीं भारत में ऐसे लोगों की संख्या 33.5 करोड़ से अधिक है। दुनिया की आधी आबादी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसमें भारत सरकार देश की ही नहीं बल्कि दुनिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रही है। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये डिमांड फॉर ग्रांट्स का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री बजरंग सोनवाने जी। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे बोलने के लिए मौका दिया। आज मी या सभागृहात जे बिल आलं त्या बिलावर बोलताना भारत देश हा कृषीप्रधान देश म्हणून ज्याची गणना केली जाते, या कृषीप्रधान देशामध्ये शेतकऱ्यांसाठी ज्या काही मागण्या आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी भारत सरकारने नवीन काहीतरी वाढ केली पाहिजे अशी माझी अपेक्षा होती। पण आता माग करताना भारत सरकारने त्याच्या बाबतीत काही मागणी केलेली नाही। शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त ग्रँट या नवीन ग्रँटमध्ये द्यावेत ही एक माझी मागणी आहे। एवढंच नाही तर साहेब, माझ्या महाराष्ट्रामध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये धाराशिव बीड संभाजीनगर या रेल्वे मार्गासाठी अतिरिक्त निधी दिला पाहिजे। बऱ्याच दिवसापासून मागच्या 2014ला मोदी सरकार आलं तेव्हापासून जुन्नर चोंडी आष्टी असा एक रेल्वे मार्ग आहे, त्याच्यासाठी सुद्धा नवीन पैसे दिले पाहिजेत, बजेटमध्ये तरतूद केली पाहिजे। बऱ्याच दिवसापासून मागील 14-15 वर्षापासून अहिल्यानगर बीड परळी रेल्वे हा पण एक मार्ग आहे। या मार्गासाठी बजेट देऊन सुद्धा काम वेळेत पूर्ण होत नाही। त्याला जर बजेट कमी पडत असेल तर ते जास्तीत जास्त दिलं पाहिजे। आणि अध्यक्ष महोदय, संबंध या सभागृहातील MP जे आहेत, मेंबर ऑफ पार्लमेंट, यांचा जो निधी आहे हा निधी अगदी कमी आहे साहेब। माझ्या महाराष्ट्रात जर बघितला तर MLAचा जो निधी आहे, जो फंड आहे, हा फंड 5 करोड रुपये आहे, म्हणजे 6 माझ्या खाली म्हणजे कमीत कमी 30 करोड। माझी एवढीच मागणी आहे की येणाऱ्या काळामध्ये 30 ते 35 करोड निधी वर्षाला तुम्ही MP लँडचा दिला पाहिजे अशी माझी या सभागृहाच्या वतीने आपल्याला मागणी आहे। साहेब, अध्यक्ष महोदय, आपल्या भारत देशामध्ये पोस्ट ऑफिस एक दळणवळणाचं खूप मोठं साधन होतं, पण पोस्ट ऑफिसेस बरेच काही बंद आहेत। त्याला नवीन पोस्ट ऑफिसेस काही माझ्या बीड जिल्ह्यामधील माझ्या कार्यक्षेत्रामध्ये झाले पाहिजेत अशी माझी मागणी आहे। आपल्याकडे मोबाईलचं युग आलंय, मोबाईलच्या युगामध्ये आपण मोबाईलवर आता पूर्ण जग चाललंय। या सर्व गोष्टी करत असताना माझ्या निर्वाचन क्षेत्रामध्ये आणखी बऱ्याच भागामध्ये मोबाईल टावर्स नाहीत।
महाराष्ट्रामधील बऱ्याच भागामध्ये हिल एरियामध्ये मोबाईल टावर नाहीत, त्याच्यामुळे मोबाईल टावरसाठी सुद्धा अतिरिक्त ग्रँट देऊन मोबाईल टावर झाले पाहिजे, ही माझी मागणी आपल्याला आपल्या माध्यमातून सरकारकडे आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय महामार्ग आमचे नितीनजी गडकरी साहेबांनी खूप मोठा देशामध्ये जाळं निर्माण केलं, पण साहेब काही माझ्या मतदारसंघामध्ये आणखी 4 लेन करण्याचे बाकी रस्ते आहेत. 548D 548C ह्याच्यासाठी 4 लेनिंग आणि 6 लेनिंगसाठीचे एक नदी द्यावा अशी सुद्धा माझी मागणी आहे. साहेब महाराष्ट्रामधील आरोग्य व्यवस्था पूर्ण ढासळलेली आहे. केंद्र सरकारनं आरोग्यासाठी सुद्धा इमारत असेल किंवा मेडिकलसाठी असेल, सिटी स्कॅनच्या मशीन असतील, अशा काही विविध योजना महाराष्ट्रासाठी दिल्या पाहिजेत अशी माझी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे मागणी आहे. एवढंच नाही तर मेडिकल कॉलेज माझ्या इथं प्रत्येक जिल्ह्याला एक नवीन मेडिकल कॉलेज द्यायचं हे केंद्र शासनाचं धोरण आहे, पण माझ्या जिल्ह्याला मेडिकल कॉलेज नाही, हे मेडिकल कॉलेज द्यावा ही एक आपल्या माध्यमातून सरकारकडे माझी विनंती आहे. साहेब शिक्षणाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल, आर्मी स्कूल याच्यासाठी निधी कमी पडतो, याच्यासाठी सुद्धा अतिरिक्त निधी दिला पाहिजे. माझ्या गोरगरीब जनतेच्या लोकांचे मुलं तिथं शिकले पाहिजेत. माझ्या जिल्ह्याच्या बाबतीत, माझ्या एका निर्वाचन क्षेत्राच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर माझा जिल्हा महाराष्ट्र सबंध देशाला ऊसतोड मजूर पुरविणारा जिल्हा म्हणून ज्याची ओळख आहे. या जिल्ह्यातील माझ्या ऊसतोड मजुरांचे जे मुलं आहेत, या मुलांसाठी एक शाळा प्रत्येक कारखान्यावर किंवा फिरती शाळा तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करावा आणि शाळा द्याव्यात ही एक माझी कळकळीची विनंती आहे. साहेब एवढंच नाही तर आपला हा भारत देश हा ग्रामीण भारत देश म्हणून ओळखला जातो. ग्रामीण एरियासाठी, रूरल एरियासाठी ग्रामपंचायत ही सर्वात महत्त्वाचं केंद्रबिंदू आहे. या ग्रामपंचायतसाठी इमारत नाही, ज्या ग्रामपंचायतमधून आपला जसा मुख्यमंत्री एका स्टेटचा असतो तसा त्या गावचा तो मुख्यमंत्री आहे, पण त्याला तिथं बसायचं